Hi all of you. Today we are going to start with the basic part, that is a balance sheet. So balance sheet is prepared on the basis of separate business entity concept. Separate business entity concept tells us that owner of a business and business is separate from each other. Because the capital of a owner or share capital is showing under the liability side of, of a business. So there are two heads under the account, that is liability and the assets. So liability is bifurcated into two parts, that is internal users and external users. We can say it internal liabilities, and we called it as a external liabilities. So the the capital for a business, the capital of shareholder, or we can say owner, is covered under the liability, considered as a liability, and it is covered under the internal liability. And for a external liability, it is again bifurcated into two parts, that is non-current liability and current liability. Current liability means if the operating cycle, that is obligation to pay of a liabilities, is more than 1 year, अगर किसी को पैसा देना है आपको और वो 1 साल से ज़्यादा के लिए आपने ले रखा है, तो वो कवर होगा नॉन करंट लायबिलिटी में। अगर आपने पैसा देना है 1 साल से पहले पहले, तो 1 साल या 1 साल से पहले, तो कवर होगा करंट लायबिलिटी। इफ द ऑपरेटिंग साइकिल, दैट इज ऑब्लिगेशन टू पे, if the operating cycle of a liability is less than or equal to 1 year, अगर 1 साल या 1 साल से कम है, जिसको कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल मीन्स ऑब्लिगेशन टू पे, तो ये कवर होगा हमारा करंट लायबिलिटी में। एग्जांपल क्रेडिटर, क्रेडिटर मीन्स अ पर्सन जिससे हमने क्या किया है, सामान उधार पे लिया है। क्रेडिटर को अकाउंट्स पेबल भी कहते हैं। ठीक है, ये वो लोग हैं जिनको हमको पैसा लौटाना ही लौटाना है, अदरवाइज ये अगर क्रेडिटर है तो वो हमको सामान नहीं देगा। एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर आप टाइम पर सैलरी नहीं दोगे तो वर्कर्स छोड़ के चले जाएंगे, आपके एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस अगर आपके वर्कर्स छोड़ के चले जाएंगे, आपका धंधा बंद हो जाएगा, बेसिकली वी कैन से। देन we have covered the liability part. We are going to discuss about the assets part. Asset part is bifurcated into two parts, that is non-current assets and current assets. इसमें भी वही है जो आपका नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी में था। इफ द ऑपरेटिंग साइकिल, दैट इज लाइफ ऑफ एन एसेट इज मोर देन 1 year, अगर किसी की लाइफ 1 साल से ज़्यादा है तो वो आपका कवर होगा नॉन करंट एसेट्स में। फॉर एग्जाम्पल फिक्स असेट, फिक्स असेट में आपका कवर होता है फर्नीचर, बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, लैपटॉप एक्सेट्रा। एंड देन एसेट्स बाइफरकेट है सेकंड पार्ट में, दैट इज करंट एसेट्स। यहाँ पर हमने कवर किया जो 1 साल से ज़्यादा है, और यहाँ पर कवर होता है जो 1 साल या 1 साल से कम है। इफ़ द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ एन एसेट्स इज लेस देन और इक्वल टू 1 year, अगर 1 साल या 1 साल से कम है तो कवर होगा करंट एसेट्स में। एग्जाम्पल इज डेटर्स, डेटर्स वो लोग होते हैं जिससे हमने सामान उधार में जिसने हमसे उधार में सामान लिया हुआ है। द पर्सन हु टेक्स गुड्स फ्रॉम अस ऑन क्रेडिट। फिर कवर होता है बैंक, स्टॉक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये सारी चीज़ें हमारे करंट में कवर होती है। क्यों? डेटर्स से हमको क्या करना होता है, 1 साल से पहले पहले पैसा लेना होता है। बैंक तो होता ही बैंक जो होता है हमारा, वो रखने के लिए नहीं होता, उससे पैसा कमाने के लिए होता है। फिर कवर होता है स्टॉक। स्टॉक भी हम ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हमारा स्टॉक ख़त्म हो, हम नया सामान बनाए, इसलिए ये आपका करंट में कवर होता है। देन वी हैव अ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पैसा या पैसे के बराबर है, पैसे के बराबर होता है मार्केटेबल
सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो होती है जो हम लोग मार्केट से हम शेयर्स खरीदते हो, उसको हम कभी भी बेच सकते हैं और पैसा उससे निकाल सकते हैं। तो ये कवर होता है आपका मार्केटेबल सिक्योरिटीज में। अगेन आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस पार्ट, like we have a two kinds of heads, liabilities and assets. Liabilities is divided into internal liability and external liability. For internal liability we have a capital is given by the owner, or we can say shareholders. And external liability is covered into two parts, that is non current and current. If the obligation to pay is more than 1 year, then it is covered under the non current. If the obligation to pay is less than or equal to 1 year, then it is covered under the current liability. And then we are going to discuss about the assets. For non-current assets we have a if the operating cycle is more than 1 year, then it is covered under the non-current asset, for example fixed asset, furniture, building, motor vehicle, laptop, etc. And then we have a current assets is bifurcated into these parts. Debtors we can say account receivable, bank, stock, cash and cash equivalent. We For a cash equivalent we can say marketable security, uh, if covered under the cash and cash equivalent. So today's session is closed. Thanks for watching my video.